बिहार के राज्यपाल 2 दिवसीय गया दौरे के दूसरे दिन पहुंचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एकात्मक मानववाद के सामाजिक पहलू दीनदयाल उपाध्याय की विरासत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। देश विदेश से कई प्रोफेसर, विद्वान सहित कई गण्यमान्य लोग हुए शामिल। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय के परागण में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय में एकात्मक मानववाद के सामाजिक पहलू दीनदयाल उपाध्याय की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह सहित देश विदेश के कई प्रोफेसर, विद्वान सहित अन्य गण्यमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है और महान भारतीय दार्शनिकों द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश ने मानव जाति को देवत्व की अवधारणा दी है। वास्तव में सदियों पुराने भारतीय दार्शनिकों ने पश्चिमी देशों सहित दुनिया को प्रभावित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे पुराने ग्रंथों का रूपांतर कर गहन अध्ययन भी किया है। भारतीय अवधारणा हमें सभी संस्कृतियों और विविधता का सम्मान सिखाती है। उन्होंने कहा कि विश्व में 5 प्रमुख सभ्यताएं हैं: ईरानी, चीनी, रोमन, तुर्क और भारतीय सभ्यताएं हैं, जो अपने अपने महत्व के लिए जानी जाती है। उन्होंने लास्ट में कहा कि हमारे संविधान निर्माता प्रस्तावना में इतने सारे बिंदुओं को रखने की बजाय एकात्मक मानववाद शब्द का प्रयोग कर सकते थे, जो विविधता पूर्ण और विशाल देश भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त है। I said that this again, we are using this terminology only because we are unaware. We have become unaware of our own cultural heritage, how in our culture politics has been defined. The politics in the light of the divinity of mankind. When you define politics, then what our thought leaders have said? They have said, Sarve Tyaga Raj Dharmeshu Drishta. Sarve Diksha Raj Dharmeshu Chokta. सर्वे विद्या राज धर्मेशु युक्ता, सर्वे लोका राज धर्मेशु प्रविष्टा. When you pursue politics which is rooted in the concept of divinity of mankind, then the requirement is not that you use fair and foul means to bring down your opponent. Then your attitude becomes totally different. Then your attitude, you know that if I have to be in political life, then I must be ready to make supreme sacrifice. I must have the best manners and best conduct, and I must be good to all kind of people. Then I will be aware that I must try to acquire all kind of knowledge, and I must be aware that my heart and mind should be big enough to accommodate people of all background, all manner of people. What we say when we take oath for different offices, I shall do justice to all manner of people without any fear or favor. Then if you drive your inspiration from the Indian cultural heritage, the concept of divinity of mankind, what Pandit Deendayal Upadhyay has, human rights under the auspices of United Nations, which recognizes for the first, please, I hope you will give due thought to what I am submitting before you. In 1948, for the first time officially, the world recognized, by world I mean every country, all the people, recognized that human being as human being is entitled to dignity. Earlier, before that,
the this thing had started crystallizing for a period of 50 or maybe you can say 100 years. But finally it took the concrete legal shape in 1948. Generally people recognize, generally, there is one supreme being. But how to approach the supreme being? The methods and the pathways are different. So the other basis which was adopted was, this is our way of doing it and this is the only right way of doing it. Therefore, that should become the basis for the cohesion and the stability of our society. And that certainly when people come together, they accumulate power and that power is used to build a certain kind of culture and civilization. वहीं इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि भारत निसंदेह एक महान देश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महान विचारकों को पैदा न करने के लिए हमारी आलोचना की जाती है। मेरे लिए पिछले सदी में देश ने दो महान मौलिक विचारकों को जन्म दिया, एक महात्मा गांधी और दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। लेकिन भारत में हम अपनी जड़ों की ओर ध्यान देने के बजाय पश्चिमी दर्शन से ज्यादा प्रभावित है, इसलिए दुनिया हमारी आलोचना करती है। लंदन में एक प्रतिभागी द्वारा भारत को गुलाम देश मानने की धारणा पर सवाल उठाने पर दिए गए स्वामी विवेकानंद के बयान को उद्धृत करते हुए डॉक्टर माधव ने कहा कि हमारे लोग सुस्त हैं, इसलिए हम खुद को बेहतर स्थिति में नहीं रख पाए। His Excellency Honorable Governor Arif Mohammad Khan ji, Plato talked about philosopher kings. I mean, those who rule should also be not just politicians but philosophers. In Arif Mohammad Khan ji, we see a philosopher also. So there cannot be a better person to inaugurate this conference, obviously. So we will listen to him at length. Very briefly, I would like to remember the great personality of our country, one of the original thinkers of our country in the last century, Pandit Dindal Upadhyaya today. Today happens to be the day of his martyrdom, Punya Tithi. In 1968, on this very day, he met with an accident which remained a very suspicious thing forever, but he passed away on this day. So annually coinciding with this Punya Tithi, we host this conference, which is taking place this year here at the Central University of South Bihar. I said that Dindayalji was an original thinker. The reason is that we are living in the era of applied thinking. There are no longer original thinkers in the world today. Not every country, not every society can produce original thinking. But there are certain societies in the history which have had that capacity to develop that original thought process. Greeks were known for it. We hear great philosophers like Aristotle, Plato.